अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद अहमद और मैं आपका दोस्त शहाब। आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में डिटेल से मुतालिया करेंगे। डेट व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। इन चारों टॉपिक्स को हम इस क्लास में कवर करेंगे। Come to the definition of sentence. A group of words which contain a subject and predicate and has a complete sense called sentence. यानी सेंटेंस की जो डिफिनीशन है ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट पर और प्रेडिकेट पर और जो एक कंप्लीट मानी देता है यानी कंप्लीट सेंस देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। Then come to the definition of predicate. Everything without a subject in a sentence is called predicate. यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो कुछ भी हो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हनीफ comes. In this sentence, Hanif is subject and comes is predicate. Ali is a doctor. In this sentence, Ali is subject, is a doctor is a predicate. Sorry, by mistake in this sentence, the AI is not. This is Ali. Ali study English. In this sentence, Ali is subject, study English is predicate. Element of sentence. There are three basic elements of sentence. Number one is subject, number second is verb, number third is object. What is subject? Subject is the person, place or thing that predicate talks about. यानी सब्जेक्ट जो है ये शख्स होता है, जगह होता है या चीज़ होता है जिसके बारे में प्रेडिकेट बात कर रहा है या जिसके बारे में प्रेडिकेट कुछ बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ आवर टीचर. इन दिस सेंटेंस, ही इज़ अ सब्जेक्ट. ही टीच अस वेरी वेल. इन दिस सेंटेंस, ही इज़ सब्जेक्ट एंड टीच अस वेरी वेल. दिस इज़ अ प्रेडिकेट. Predicate is a part of sentence which talks about the subject. यानी predicate जो है ये subject के बारे में कुछ बोलती है या गुफ्तगू करती है। Ali comes. In this sentence, come is a predicate because they talks about Ali. Hanif is a doctor. In this sentence, is a doctor is a predicate because it talk about Hanif. Sequence of sentence. There are four sequence of sentence. यानी sequence of sentence या structure of sentence जो हमारे पास है वो चार है। नंबर एक imperative sentence, नंबर सेकंड is negative sentence, नंबर थर्ड is interrogative sentence, नंबर फोर्थ is negative interrogative sentence. ये चार हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है जिसको हम एक एक को पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस सीक्वेंस और स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है या सीक्वेंस है ये तमाम टेंसेस फॉलो करती है मां सिवाय दो के, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये स्ट्रक्चर या ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करती, बाकी सब फॉलो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर चेकिंग द पेपर, शी हैड ब्रोकन द ग्लास। नेगेटिव सेंटेंस सीक्वेंस और स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, they are not playing hockey. Or for example, they do not or don't go Mardan. Interrogative sentence sequence or structure: helping verb plus subject plus verb
plus object. In the last we mention the sign of interrogation. For example, are the boy taking exam? Do they miss the class? Come to the fourth sequence. Negative and interrogative sequence are structure. Helping verb plus subject plus not plus verb plus object. For example, are they not playing hockey? In another structure or sequence of negative and interrogative sentence was that helping verb plus not plus subject plus verb plus object, and in the last sign of interrogation. For example, aren't they playing hockey? Sign of interrogation. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।